So hello students, today we are going to discuss biology part of the science board exam of 10th class बोर्ड एग्जाम फॉर 2025. सो देखिए बायो के क्वेश्चन हम देखते क्या आए थे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अ टॉल पी प्लांट विद राउंड सीड इज क्रॉस विद शॉर्ट पी प्लांट विद रिंकल सीड. तो F1 जनरेशन विल बी, तो F1 जनरेशन विल बी 100% टॉल विद राउंड सीड्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पेयर ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स लोकेटेड इन ह्यूमन ब्रेन. तो ह्यूमन ब्रेन में कौन सी ग्लैंड लोकेटेड है? सो आउट ऑफ द ऑप्शंस हाइपोथैलेमस एंड पीनियल ग्लैंड इज द राइट आंसर. You can see the explanation as well. Next question is the matching the option. So the column A, leishmania, regeneration, and the second is Spirogera, multiple fission, planaria, binary fission, plasmodium fragmentation या budding. So which option is correct? तो यहाँ पर leishmania with binary fission, Spirogera with fragmentation, planaria regeneration, plasmodium multiple fission. तो asexual reproduction से क्वेश्चन है. So this is the right answer. Next question number 11 था यहाँ पर. The basic filtration unit of excretory human system is, so that is nephron. Nephron is the structure and function unit of kidney. Next question, in human alimentary canal the digestive juice is secreted by the gastric gland. Which gastric glands are involved during digestive juice secretion? So that are hydrochloric acid and pepsin along with mucus. So आप सभी को पता है HCl creates acidic environment, pepsin helps in digestion of proteins, mucus protects the inner lining of the stomach. Next, consider the following food chain. Grass is eaten by grasshopper, that is eaten by frog and snake and then eagle. So what will be the amount of energy available at third topic level? तो यानी कि grass is the first topic level, plants producer, then grasshopper and then frog. So energy transfer आपको पता है 10% law. So according to 10% law, 10% energy is transferred to the next level. So तो यहाँ पर frog third level रहेगा, trophic level. So 50% 50 kilojoule energy will be there. तो 50 into 50 kilojoule into 10, so that is 5 kilojoule for grasshopper और ग्रास के लिए 5000. मतलब 10% आप 5000 से स्टार्ट करेंगे, 5000 then 500 then 50. नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ओजोन लेयर. सो इट इज़ यूज एज रेफ्रिजरेंट इन फायर एक्सटिंग्विशर. ये गलत स्टेटमेंट यहाँ थी, बाकी स्टेटमेंट सही है. नेक्स्ट एसेशन रीजन में क्वेश्चन आया था, xylem tissue moves water and mineral obtained from the soil by the roots, and the reason is xylem tissue is found only in the roots of plant. So देखिए आंसर इज कि assertion is true but reason is false. तो ठीक है, xylem helps in transfer or transport of water and minerals from the soil, लेकिन ये roots में प्रेजेंट होता है, ये गलत है. ठीक है, क्योंकि स्टेम पार्ट में प्रेजेंट होते हैं, थ्रू आउट द प्लांट होता है. नेक्स्ट एक और असेशन रीजन यहाँ पर था, द फूड वेब इज अ नेटवर्क ऑफ सेवरल फूड चेन ऑपरेटिंग इन इकोसिस्टम, एंड द रीजन इज द फूड वेब डिक्रीजेज द स्टेबिलिटी ऑफ इकोसिस्टम. सो आंसर सी इज करेक्ट. तो यहाँ पे असेशन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स. द फूड वेब इज इंडीड अ नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टिव फूड चेन एंड इट इंक्रीजेज द स्टेबिलिटी ऑफ एन इकोसिस्टम रादर देन डिक्रीजिंग इट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज ब्रेन प्रोटेक्टेड इन आवर बॉडी. तो आपको पता है ब्रेन इज प्रेजेंट इन द क्रेनियम हैविंग द 3 प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन मेनिंजेस, और एक फ्लूइड भी प्रेजेंट होता है, दैट इज CSF, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, दैट हेल्प्स टू प्रोटेक्ट आवर ब्रेन फ्रॉम शॉक्स एंड जर्क्स. नेक्स्ट क्वेश्चन बी पार्ट इसका था, अ डॉक्टर फाइंड्स in one patient that not maintaining a proper posture and balance. So you know cerebellum part of our hindbrain is responsible for its maintenance of posture and balance. Next question, protein control the expression of various character, explain the statement. So आपको पता है जैसे example tallness. So you all know that DNA is converted into mRNA and mRNA is converted into protein. This is how our cells work. So protein are actually encoded by genes and that determine traits. So in tall plant, the gene responsible for tallness produces a protein that influence the plant height and regulate the hormone like gibberellin as well. Gibberellin is also responsible for the
phytoplant. B part इसमें था explain the mechanism of inheritance used by sexually reproducing organism to ensure the stability of DNA of the species. So yes, each gene is present on chromosome which are separate independent piece of DNA. So each cell in an organism have 2 copies of each chromosome, one from the male parent and one from the female parent. So during gamete formation, the chromosome becomes half and it becomes haploid. So condition, and when fertilization occur, 2 gametes combine and the 50% DNA is from mother, 50% is from father. This process ensures the stability of DNA in a species and maintain the genetic information across the generation. One more question is there. We do not clean natural ponds and lakes, whereas aquarium or swimming pool needs to be cleaned regularly. Why? So देखिए, natural ponds and lakes की बात करें, they don't require cleaning because they are self-sustaining ecosystem. They contain microorganisms, plants and aquatic animals that maintain the natural balance by decomposing the organic waste and recycling the nutrients. और एक्वेरियम की बात करें, सो एक्वेरियम एंड swimming pool, they are not a natural ecosystem, they are like artificial ecosystem, and we need to change the water or the content in the aquarium by itself. Name the blood vessel that bring oxygenated blood. Second है deoxygenated blood to the human heart, and also name the chamber of heart which receive deoxygenated and deoxygenated blood from this chamber to lungs for oxygen. So oxygenated blood vessel is pulmonary vein. This is exception. Deoxygenated blood is carried by pulmonary artery. ठीक है. Then heart chamber that receive the deoxygenated blood is the right atrium, and right ventricle pump the deoxygenated blood to the pulmonary artery. ठीक है. Pulmonary artery carries the deoxygenated. Here exception is there. Pulmonary word is related to lungs. The gene, next question is, the gene combination of purple flower is denoted as capital W and white flower is represented by small w. So when these two plants cross, F1 generation is obtained. कैसी F1 generation आएगी? So you have to give the percentage and ratio of the combination and difference of dominant and recessive trait. So देखिए यहाँ पे dominant trait का जो combination रहेगा, ratio रहेगा, that is 3:1, and recessive trait यहाँ पर ये 3 है, तो इधर आपका प्योर फॉर्म एंड हाइब्रिड फॉर्म रहेगी, एंड 25% विल बी रिसेसिव. और F1 जनरेशन की बात करें तो वहाँ तो पूरा ही हाइब्रिड रहेगा. सो द परसेंटेज ऑफ वाइट फ्लावर इज़ 25%, दैट इज़ 1/4 पार्ट. और अगर हम जीनोटिपिक रेशियो की बात करें, दिस इज़ फिनोटिपिक रेशियो 3:1, जीनोटिपिक रेशियो इज़ 1:1. ठीक है. एंड डोमिनेंट ट्रेट इज़ द ट्रेट और द करेक्टर दैट एक्सप्रेस इट सेल्फ whether in homozygous or heterozygous form, जैसे purple flower. And recessive trait is expressed only in the pure form, for example white flower. So these are the questions from biology. I hope this will help you all. So all the very best for your result, and do prepare for your next exam. All the very best.